2014년 기준 전체 인구의 절반에 달하는 6억 2천만 명이 집에 화장실이 없어 노상 배변을 하며 살아가는 인도의 현실. 인도에선 예로부터 집안에 화장실을 두는 것보다는 야외에서 용변을 보는 게 더 깨끗하다 여겼고, 전통과 종교적인 이유로 정착하지 못한 화장실 문화를 바꾸기 위해 큰 결단을 내린 어느 부부의 이야기. जया, क्या आप वाकई एक टॉयलेट की वजह से अपने पति को तलाक दे रही हैं? क्या आपको ये बजे काफी ना लगती? एक रात यहाँ रुकिए, सुबह खुले में लोटा पार्टी के साथ जाइए, सांप बिच्छू अनेक जानवरों के बीच बैठिए, तब समझ आएगी आपको हमारी प्रॉब्लम। टॉयलेट तो घर में होना ही चाहिए। ये लड़ाई तो जी सबके इससे है, सोच से। बीवी पास चाहिए तो घर में संडास चाहिए। 잘못된 현실을 바로잡고자 하는 평범한 사람들의 반란. तुम्हारी लड़ाई सभ्यता से है, कठिन परीक्षा है। इस देश में सभ्यता से लड़ना एक कठिन काम है। 그 누구보다 금술이 좋았던 부부가 이혼을 결심한 사연의 시작. 6개월 전 어느 축제 부럽지 않은 규모로 성대한 결혼식을 올린 케샤부와 자야. 힌두교를 신봉하는 아버지 밑에서 전통을 중요하게 생각하는 집안의 케샤부와 서구적인 교육을 받고 비교적 개방적인 집안에서 자라온 자야. 서로 너무나 다른 환경에서 자란 두 남녀가 만나 우여곡절 끝에 사랑의 결실을 맺고 세상 가장 행복한 첫날 밤을 보낸 이날. 늦은 새벽 누군가 창문을 두드려 확인해보니 सब इंतजार कर रहे लोटा पार्टी में तुम्हारी वेलकम का। जल्दी लिया नहीं भोरिया को, मामला अर्जेंट हो रही हो। 이때만 해도 자야는 왜 새벽에 여자들끼리 보여 들판을 향해야 했는지 알지 못했죠. सनाया, पूरे गांव में किसी ने टॉयलेट ना बनवाया? ना भाभी, जहाँ तो ना है। 당연하게 집에 있어야 할 화장실이 없어 마을에서 꽤나 떨어진 숲속까지 걸어가야만 하는 도저히 믿을 수 없는 이 엄청난 현실을 सारी लाज शर्म छोड़ कर लग जाओ काम पे। अरे शर्मा रही है हमसे। मायके में क्या महल दो महलों का इंतजाम था? 그동안 당연하게 집에 화장실이 있는 집에 살던 자야는 이 말도 안 되는 상황을 받아들일 수 없었죠. मैं खुले में शौच नहीं कर सकती केशव। 이렇듯 첫날 밤부터 부부 사이엔 금이 생겨버리고 치लो। 케샤부는 많은 고민 끝에 아버지에게 집에 화장실을 지켰다고 겨우 용기 내어 조심스럽게 말을 꺼내자마자 अब हमारी टोपर बहू को घर में संडास चाहिए, न संस्कृति की समझ, न रीति रिवाजों का ज्ञान। 역시나 아버지는 역정을 내며 이를 반대했고, 그럼에도 물러서지 않고 계속 아버지를 설득하려 애를 써보지만 बाबूजी, वैसे अगर बैठने का अलग कमरा, खाने का अलग कमरा बन सके तो एक संडास भी बन ही सके। हमें यहीं आंगन में जला देना, फिर बना लेना संडास। 하지만 결국 아버지를 설득하는데 실패했고 화장실을 못 가 힘들어하는 아내를 위해서 어떻게든 임시 방편이라도 방법을 찾아야만 했죠. 그렇게 해서 찾게 된 첫 번째 방법. चौथी बार पूछ रही हूँ, क्यों ले आया सवेरे सवेरे? जा जा ऊपर नानी जी से मिलाओ। बेचारी बिस्तर से लगी है ना, उठ चल भी नहीं सकती। इसीलिए नानी के कमरे में संडास बनवाना पड़ो है। 마을에 유일하게 화장실이 설치된 양로원에서 결혼 후 처음으로 마음 놓고 볼일을 볼 수 있었지만 속은 시원해져도 마음은 계속 불편했죠. अब क्या हुआ? क्यों बेनक रही हो तुम? तुमको ना पता? आज एक जरा सा टॉयलेट जाना चोरों जैसा काम लगा मुझे केशव। अरे यार, सालों से लड़कियां ससुराल के तौर तरीके एडजस्ट करती आई है। अब उठाते रहो BCA वाले नखरे। तुमको सच में लगता है तुम नखरे उठा रहे? क्या? 화장실 때문에 계속되는 부부의 불화. केशव उठो, खेत लेकर चलो तुरंत जल्दी। I'm sorry, मैंने कल बड़ी बदतमीजी से बात की ना तुमसे। 그럼에도 어쩔 수 없이 들판을 향해 가야만 하는 아내. 그 민망한 길을 함께 동행하는 자상한 남편. 그렇게 한참을 어색해하다 일을 보려던 이때 누군가 오토바이를 타고 길가로 향하기 시작하더니 그건 다름 아닌
이렇게 말도 안 되는 민망한 상황을 겪게 된 이유. 자야는 또다시 새벽의 들판행을 거부하며 언제 배가 터져도 이상하지 않을 상태에 놓이자 케샤브는 이번엔 친구들과 함께 대책을 논의해봅니다. देखो केशव भैया मेरी बात मानो ना तो भाभी को कुछ दिन घुमा लो दादी के यहाँ गोरखपुर तुम्हारे गांव में 7 मिनट का स्टॉप लगो है ट्रेन का आपसे क्या कहा? कितने मिनट का स्टॉप लगेगा? 7 मिनट को 마을에 정차 중인 기차의 화장실을 이용할 수 있는 단 7분의 해피타임. 그렇게 매일 하루에 한 번 화장실을 쓸 수 있게 되면서 부부의 관계는 매우 빠르게 호전되기 시작했고 매일마다 케샤브는 기차의 그녀를 데려다 줍니다. 그렇게 행복한 하루가 계속되던 어느 날 सैर सपाटे के लिए तो निकलते ही हो 케샤브는 아버지의 심부름을 위해 잠시 자리를 떠나고 자야가 화장실에 들어간 이때 기차의 복도에 쌓인 짐들로 인해 문은 열리지 않고 이때 케샤브는 심부름을 마친 뒤 시간에 맞춰 기차역으로 돌아가지만 급기야 기차는 출발 시간에 맞춰 움직이기 시작합니다. 그리고 바로 이때 뒤늦게 케샤브가 달리는 기차에서 자야를 발견하고 그녀를 구출하기 위해 달려오지만 자야는 이 상황에 크나큰 자괴감과 현타를 느끼며 신혼집으로 돌아가길 거부하고 그냥 이대로 화장실에 있는 부모님의 집으로 돌아가 버립니다. 그렇게 예상도 못한 이 부부의 별거가 시작되었죠. 100 बार फोन करोगे तभी यही जवाब मिलेगा केशव नहीं आ रही वापस बीबी साड़ी उठा के खुले में बैठे इसमें बड़ी साल है तुम्हारी अब रास्ते सारे खत्म मंजिल ढूंढ लो बस 아내는 화장실 없인 더 이상의 결혼 생활도 없다 버텼고 아버지는 아버지대로 절대로 화장실을 집안에 들일 수 없다 완강한 태도로 버티고 있으니 그 사이에 끼어버린 케샤브는 그야말로 죽을 맛. 케샤브는 이번엔 마을 회의에서 공중 화장실을 짓자는 안건을 건의합니다. सरपंच जी मैं तो सिर्फ इतना चाहूँ कि एक पब्लिक टॉयलेट के लिए पंचायत अर्जी डाल दे सरकार को बस। 하지만 사람들의 반응은 그저 냉담할 뿐. इतने छोटे से कमरा में बिठा देगो तो गंदगी ना होगो ऊपर से बदबू से दम घुट जाएगा सो हालत जब जरूरत ही ना है तो काहे को सरकार को तकलीफ दे हमें ना चाहिए शौचालय अपनी लुगाई का पाठ सारे गांव में मत पड़ा केशव दशस्थान प्रतिजय मूत्रम कुर्य मनु ने मनुस्मृति में लिखा है घर से दूर जाके ही शौच करना चाहिए। श्लोक को पूरा कौन करेगा सरपंच? अगला पन्ना चिपक गयो का थूक से। पानी के आसपास शौच नहीं करना चाहिए। आपके जैसे लोगों ने धर्म को अपने हिसाब से घुमा रखा है। किसी को संस्कृत ना आती हो तो कुछ भी बोल के निकल जाओगे। अब बीवी वापस आए ना आए संडास तो लाके छोड़ूंगा इस गांव में। 아내를 위해 더 이상 물러서지 않고 싸우기로 마음먹은 케샤브. 그리고 자야는 क्या हाल हो रखा है देश का ये देखो 3000 करोड़ का स्कैम और ये सारे स्कैम 4 साल पहले हुए थे कक्का छोड़ो सारे सारे के सारे मिले 나라의 관료들이 화장실 건설에 투입된 비용을 제대로 쓰고 있지 않다는 정황을 발견하여 이러한 자료를 넘기며 케샤브를 도왔고 곧바로 이를 따지기 위해 사업에 관련된 행정관을 찾아가는데 जी केशव फ्रॉम मंदगांव ये जो गरीबों का पैसा आप लोग खाते हैं उसे निकालते कहाँ हैं? ये समझ लो कि जी आपको तो मैं एक्सपोज करके रहूंगा। 하지만 그의 뜻밖의 반응. चलो इतने सालों बाद ही सही कोई तो आया हिसाब मांगने। और ये दर्जी की दुकान, ये है घोड़े का अस्तबल, ये है नाई की दुकान, ये सारे सरकारी टॉयलेट हैं जो आप लोगों ने अपने काम में ले लिए। घर घर शौचालय योजना सरकार बनाती तो है जो आप तक पहुंचकर रिजेक्ट हो जाती है। 오히려 의문을 가지고 찾아온 이들을 반기며 किसी ने तो टॉयलेट की समस्या को समस्या समझा। अब बताइए विलन कौन हुआ? 그동안 정부에서 엄청난 예산을 퍼붓고도 왜 아무것도 바뀌지 않는 것인지 마냥 정부 탓만 할 수 있는 사항이 아님을 설명하죠. तो आप ये कहना चाहते हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं है? पीआईएल समझते हो?
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वकील के पास जाओ, पीआईएल दर्ज करो पंचायत के खिलाफ कि गांव में सरकारी टॉयलेट चाहिए। 변호사와 상의한 내용을 토대로 화장실을 제멋대로 용도 변경한 증거들을 수집하고 마을에 화장실이 없다는 것을 입증하여 끝끝내 마을에 화장실 건설 승인을 받아내지만 काम हो जाएगा। यहाँ से कुल 11 महीने मान के चलो। 그러나 화장실이 지어지기까지 절차상의 문제로 너무 오랜 시간이 걸리고 단 하루라도 빨리 아내와 함께 살기 위해 본인이 직접 인부들과 함께 화장실을 짓기 시작합니다. बाबूजी से खाना थोड़ा सा खा लेते तो 비록 우리가 보기에는 별것 없는 화장실 한 칸일 뿐이지만 화장실이 생김으로써 수많은 여자들은 새벽의 들판에서 각종 성범죄의 위협에서 벗어날 수 있을 것이고 길거리는 예전과 비교도 안 될 정도로 깨끗해지면서 마을의 모든 사람들의 생활에 매우 큰 긍정적인 변화가 찾아올 것이죠. 그렇게 염원하던 화장실이 아주 멋지게 잘 지어졌습니다. 이제 화장실이 마을 사람 모두에게 공개되기 바로 전날. 곧 아침이 찾아올 늦은 새벽에 소리에 참있게 밖을 나서자 결국 아버지와 마을의 이장과 합세하여 자신들의 고집을 비겁한 방법으로 부리기 시작했죠. क्यों रे सरपंच? अपनी औरत का सबके सामने प्रदर्शन करना धर्म है? शास्त्रों का पोता खोल लड़की ना या खुले में हागने में मोक्ष होती है। हम तो फंसे हैं धर्म के अंधे खेल में। ये शर्म और धर्म इसके साथ जाओ, अपने घर जाओ, मनाओ खुशियाँ। केशव का ताजमहल तोड़ के आ गए। 결국 케샤부는 아내에게 화장실을 선물하지 못했습니다. 이대로라면 10여 개월 뒤 지어질 화장실도 장담할 수 없죠. हाँ जी, अब तो सब करके देख लिया। ना केशव, 하지만 이때 자야부는 케샤부에게 एक आइडिया है मेरे पास। 본인들의 사연을 언론에 제보하여 신문 기사를 본 마을 사람들은 크게 술렁이기 시작합니다. शौचालय के लिए तलाक? तलाक तो 1700 सालों में नहीं हुआ हमारे गांव में। सोचा नहीं था जीते जी ये सुनने को मिलेगा। ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी ठीक ना होवे, पूरे जिले में बदनाम हो जाएगा गांव हमारा। 화장실로 인해 이혼을 결심한다는 부부의 소식이 급속도로 큰 이슈로 떠오르기 시작했죠. जया, क्या आप वाकई एक टॉयलेट की वजह से अपने पति को तलाक दे रही हैं? क्या आपको ये वजह काफी ना लगती? एक रात यहाँ रुकिए, सुबह खुले में लोटा पार्टी के साथ जाइए, सांप बिच्छू अनेक जानवरों के बीच बैठिए, तब समझ आएगी आपको हमारी प्रॉब्लम। पर सरकार तो इस मामले में काफी विज्ञापन कर रही है। तो केशव, क्या आप भी सरकार को दोषी मानते हैं? काम आधा करके चले गए। टॉयलेट बना दिया पर इस्तेमाल ना समझाए। देखो जी, नंबर 1 के दोषी तो हम ही हैं। स्कैम भी इसीलिए हुआ कि हमें टॉयलेट ना चाहिए। टॉयलेट तो घर में होना ही चाहिए। ये लड़ाई तो जी सबके इससे है, सोच से। बीवी पास चाहिए तो घर में संडास चाहिए। 이들 부부의 인터뷰는 대중들의 큰 호응을 불러오며 각종 언론에서도 이를 다루기 시작했고 이로 인해 사람들의 생각 또한 조금씩 바뀌기 시작합니다. चल खाना लगा। रोटी तो ना बनी जी यार। रोटी ना बनाई मतलब? खाना खा लिया तो जाना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया तेरा? 그동안 당연하게 생각했던 야외 배변을 거부하는 여성들도 늘어나고 अम्मा! क्यों नहीं जा रही थी मैं नहीं जा पाऊंगी खेत तक। 그리고 화장실을 완강하게 거부했던 아버지조차 इसी में जाओ। अरे सोच क्या रहा है, तेरी माँ मरती मर जाएगी। 전통을 지킨답시고 천인 공로할 불효를 저지를 순 없기에 그도 어쩔 수 없이 화장실의 필요성을 받아들일 수밖에 없었죠.
그리고 마을의 여성들은 케샤부와 자야의 부부의 뜻을 따라 마을에 화장실 건설을 촉구하며 여성들의 이혼 릴레이가 이어지고 और इन दोनों के अलग होने की वजह है 3,000 करोड़ रुपए का बखेड़े घर में ही सुलझा लेने चाहिए। तलाक तो 1700 सालों में ना हुआ हमारे गांव में। ऐसा लगता है कि यहाँ लोग खुद शौचालय बनाने के खिलाफ हैं। जिस गांव में शौचालय को ही गंदा समझा जाता है वहाँ ऐसे तलाक का होना वाजिब है। 남녀의 서로 엇갈린 화장실 건립 찬반 의견이 팽팽한 가운데 아직까지도 정부에선 여러 절차적 문제 때문에 화장실 건립의 절차가 더디게 진행되고 있는 상황에서 आपने अपनी शादी बचाने की पूरी को 어느덧 화제의 중심인 케샤부와 자야의 이혼 재판 날이 다가왔죠. सारे पत्ते उल्टे पड़ गए। हमारे तलाक का आइडिया फेल हो गया। कल सुबह कोर्ट जाके तलाक की अर्जी वापस ले लेंगे। जी मेरी अकेले की लड़ाई ना रही। सॉरी। बीवी तो तुम उसी दिन बन गई थी जब इतने बवाल के बाद भी बाबूजी की थाली लगाई, जब मेरी वजह से खेतों में चली गई तुम, या आज जब देश में कुछ बदलने के लिए मुझे भी छोड़ने को तैयार हो। तुम्हारे लिए तो मैं सूली चढ़ जाऊं। ये तलाक क्या चीज है? कल फैमिली कोर्ट में मिलेंगे। 아직 서로를 사랑하지만 잘못된 문화를 바꾸기 위해 운명을 건 케샤부와 자야. जया एंड केशव अपने फैसले पर अटल हो। जी शौचालय नहीं तो शादी नहीं जी। 그리고 이때 सर सीएम के यहाँ से आया है। 이혼 재판이 시작되기 몇 시간 전 के बारे में तो हम सब ने सुना था, लेकिन सामूहिक तलाक पहली बार। 총리가 뒤늦게 이 사태를 알게 되었고 वर्मा आज एक काम करो, 7 ताले लो और उन दफ्तरों के टॉयलेट बंद करवा दो जहाँ से ये फाइलें निकलती हैं। जिस तन लागी वो तन जाने। 7단계나 거쳐야 되는 행정 절차 문제로 인해 늦어지고 있는 화장실 건립 승인이 매우 빠르게 진행되었고 11개월 기다려야 하는 절차가 불과 몇 시간 만에 모두 승인되어 ये कोर्ट जया और केशव के तलाक की अर्जी को नामंजूर करता है। सरकार ने केशव के गांव में टॉयलेट बनाने की अर्जी को मंजूर कर लिया है। कल सुबह से गांव के बाहर वाले मैदान में कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाएगा। 드디어 부부의 바람이 이루어졌지만 아직 아버지의 생각까지 바꾸지 못한 채 아내와 함께 집으로 갈 수 있을지 걱정뿐이었는데 하지만 아버지는 अरे केशव, बहू घर में कदम रखना। ये सब कुछ छोड़कर 끝끝내 고집을 버리고 부셔버린 화장실까지 다시 고쳐 사람들의 마음까지 바꾼 며느리에게 최고의 선물을 안겨주며 영화는 마무리됩니다. 이 영화는 시브람 날레와 아나타 날레 부부의 실제 사연을 재구성해서 만든 영화입니다. 인도 정부에선 뒤늦게나마 야외 배변의 심각성을 깨닫고 2014년부터 지금까지 총 1억 1천만 개의 화장실의 보급이 이루어졌음에도 왜 아직도 화장실 문화가 바뀌지 않는지 영화 토일렛이 그 이유에 대해 적나라하게 보여주고 있죠. 오랫동안 학습된 문화를 바꾸는 것은 정말로 어려운 일이지만 그럼에도 잘못된 것은 바로 잡으려 하는 이들 부부와 같은 사람들은 계속 존재하고 이러한 사람들의 노력 끝에 꽤나 유의미한 결과를 만들어내면서 결국 세상을 바꾸는 건 언제나 평범한 사람들이라는 진리를 긍정의 힘을 통해 보여주는 영화 인도 영화 토일렛이었습니다.